Okay, so we will start with the transformation of ancient phase. अभी हमने इसके बारे में पूरा explanation कर लिया, अभी इसको PPTs पे देख लेते हैं. Now, from the 6th century onwards, significant changes occurred in the social organization. So land grants became frequent, and I told you why land grants became frequent. What was the actual idea behind land grants? Now the villages were granted to Brahmins on a large scale. Now this led to the rise of class of landlords. और यही क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स का जो ये सिस्टम है, ये फ्यूडल लॉर्ड्स में कन्वर्ट हुआ, और ये वही फ्यूडल लॉर्ड्स है जो आगे चल के जमींदार बने ब्रिटिश रूल के टाइम पे. Who were the intermediaries between the British government and the peasants. So now all aspects in society came to be determined according to the landed possessions of a person. So land now onwards became a part of wealth, which was not earlier. और वैदिक टाइम पे तो हमने देखा था कि लैंड वाज नॉट एट ऑल एन एसेट. इट वाज द नंबर ऑफ काउज that counted as wealth. So thus, the central factor that ultimately transformed the ancient society into medieval society was the practice of land grants. Now, from 7th century onwards, numerous castes were created. Now we find the coming of thousands of mixed castes. Now the people came. अब ये जो सारी कास्ट थी, देखो कास्ट इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ण, जाति. ये जाति सिस्टम है. जाति जो होती है वो ऑक्यूपेशनल बेस्ड होती है. वर्ण सिस्टम इज अ बिट ब्रॉड इन कैटेगरी, बट ये जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट आर बेसिकली दे आर पार्ट्स ऑफ वर्णास, बट विद इन अ वर्ण दे कैन बी एंडोगेमस ग्रुप्स. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द कास्ट वर क्रिएटेड इन द अमंग द शूद्रास. और ये जो कास्ट है यही वो जातियां हैं, और ये ऑक्यूपेशनल बेस्ड होती है. जैसे लोहार की कास्ट हो गई, धोबी की हो गई, कारपेंटर की हो गई, ऐसे मतलब ये जो भी जिस ऑक्यूपेशन में रहेगा उस हिसाब से कास्ट क्रिएट होगी. नाउ बिकॉज उसका सिंपल रीजन ये था कि नाउ ऑल पीपल वर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स. बेसिकली एग्रीकल्चर जब डेवलप होता है तो वेरी फ्यू पीपल कैन प्रोड्यूस फूड फॉर rest of the population. So what would the other people do? So other people specialize. So they specialize in various occupations. तो फिर वो जिन occupations में उनका specialization होता गया, वो occupation ही उनकी जात बन गई. ओके, उनकी कास्ट बन गई, वो ग्रुप्स बन गए, एंड दे वर एंडोगैमस. एंडोगैमस मतलब मैरिजेस विद इन द ग्रुप, एंड दैट इज द रीजन दे सर्वाइव्ड इवन टिल डेट. Okay, then the people came to be divided into subcastes according to the territory to which they belong. Now many tribal people were also admitted into Hindu society because of land grants. ठीक है. सो ओरिजिनली जो अभी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो नोटिफाइड ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया की वो 8 से 10% है, पर इन रियलिटी वो बहुत ज़्यादा रही होगी, क्योंकि ये पॉपुलेशन भी तो धीरे धीरे वैदिक ब्राह्मणिकल सोसाइटी में एडमिट होनी शुरू हुई. Now the Brahmins and the Rajputs appear as an important factor in the Indian polity and society around the 7th century AD. So the tribal people were mostly enrolled as Shudras and mixed castes. Now every tribe or clan was now given the status of a separate caste in Hindu society, and accordingly their functions and duties were also, of course, determined. Now we notice an important change in the agrarian economy as well. तो अब इसमें क्या हुआ, लैंडेड बेनिफिशियरीज कुड नॉट कल्टिवेट द लैंड्स बाय देमसेल्व्स. ठीक है. तो उसके लिए उनको चाहिए होते थे लोग. अब वो लोग तुमको कहाँ मिलेंगे, तो तुमको एक्चुअली जो बहुत प्रिमिटिव एग्जिस्टेंस के लोग हैं उनको तुमको धीरे धीरे हिंदुआइज करना पड़ेगा, अपने कल्चर का पार्ट बनाना पड़ेगा. एंड कल्चर का पार्ट बनाने के लिए बेस्ट तरीका होता है ये द स्प्रेड ऑफ रिलीजन. उनकी जो बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस है तो उसमें से कुछ तुम भी अडॉप्ट कर लो और अपनी ज़्यादा उनको दो. सो दिस इज हाउ दे गेट assimilated into the Brahminical order, and then you can utilize them for agricultural works. So
Now the actual cultivation was entrusted to the peasants and sharecroppers. Now Hyun Sang describes the Shudras as agriculturists, which suggests they possibly came to occupy the lands. Okay. Then feudalism. तो अब ये feudalism जो originate हुआ इस period में वो इसी land grants का offshoot है. Now the political essence of feudalism was in the organization of the whole administrative structure on the basis of land. ठीक है. Now the economic essence was in the institution of serfdom, whereby peasants were attached to the soil held by the landed intermediaries placed between the king and the actual cultivators who had to pay rent. ठीक है. या तो यू हैव टू पे इट इन काइंड और इन कैश. तो कैश तो तब होती नहीं थी, तो काइंड में ही करते थे. काइंड इन द में मतलब दैट यू विल वर्क फ्रॉम देम फॉर द landlord and in return you will get some food. So it was based on a self-sufficient economy in which things were mainly produced for local use of peasants and their masters and not for the markets. The earliest epigraphic record of land grant is an inscription of 1st century BC, which mentions grants of villages as gift by Satvahana rulers. तो हमने देखा था कि पहला जो लैंड ग्रांट की प्रैक्टिस थी सतवाहनों के टाइम पे हुई थी, एंड सतवाहनास ग्रांटेड lands to Brahmin priests and also to Buddhist monks. So Satvahanas, they themselves claim to be Brahmins, which of course they were not. And they were, according to Puranic tradition, Satvahanas कौन थे? वो एक ट्राइबल ग्रुप्स थे आंध्र प्रदेश एरिया से. उनका पुराणों में नाम भी आंध्रास करके लिखा हुआ है. So, however, there is no indication of the ruler forsaking his administrative right over the land. Now, later grants, especially after 5th century AD, had two important features. So, first is transfer of all sources of revenue and surrender of policy and administrative functions. तो अब जब तुमने सारे रेवेन्यू सोर्सेज भी सरेंडर कर दिए, तुमने पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी लैंड लॉर्ड्स को दे दिए, तो फिर सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल उस पर वैसे ही कम हो गया. बट ये सब हो क्यों रहा था? आई टोल्ड यू इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट कि ये जो क्राइसिस वर्ण डिवाइडेड सोसाइटी में इमर्ज हो रहा था, बिकॉज द लोअर स्टेटस ऑफ शूद्रास एंड वैश्यास कुड नॉट बी tolerated just like that. तो उसके लिए obviously retaliation तो होगा ही. So the practice of land grants basically helped in controlling all these recalcitrant peasants or the groups. Then Pravasena II, the Vakataka ruler of 5th century AD, gave up control over almost all sources of revenue. तो जैसे उसने लैंड ग्रांट्स तो इतने ज़्यादा दे दिए थे वाकाटका एम्पायर, इसीलिए तो उसका ज़्यादा नामो निशान नहीं है. What all we know is that Chandragupta II of Gupta dynasty had married his daughter to Vakataka prince, and eventually they basically got control of the Vakataka empire as well. और उनका एम्पायर अपने आप ही वीक इसलिए था क्योंकि उन्होंने ढेर सारे लैंड ग्रांट्स करके रखे थे. तो उन्होंने हर सोर्स ऑफ रेवेन्यू गिव अप कर दिया था. जैसे कि पैस्चर्स का हाइड्स मतलब स्किन, एनिमल स्किन जो रहता है. देन चारकोल मोन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, देन फोर्स्ड लेबर एंड ऑल हिडन ट्रेजर्स एंड डिपॉजिट्स, फॉर एग्जांपल माइंस, ये सब कुछ दे दिया. Now in the Gupta period, residents including cultivators and artisans were asked in the grants to pay the customary taxes to the donis and obey their commands. Okay. Now the post-Gupta grant commanded regular soldiers not to create disturbance to the Brahmins. Then 5th century AD rulers retained the right to punish thieves on the one of the main bases of state power जो रहता है. तो उन्होंने रखा पनिशमेंट देने का, लेकिन कई केसेस में फिर बाद में इवन जुडिशियल पावर्स फंक्शंस वर आल्सो असाइंड टू द ब्राह्मण्स हु वर गिवन लैंड ग्रांट्स. तो उनके एरिया में जस्टिस डिलीवरी करना भी उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, सो दैट किंग के ऊपर एडिशनल बर्डन ना आए. और ऑफ कोर्स
टैक्सेशन में थोड़ा इजाफा हो जाए उन किंग्स. दैट इज व्हाई किंग्स इवन डिड नॉट बॉदर टू रेज ह्यूज आर्मीज, और आर्मीज को पेमेंट करने के लिए पैसे कहाँ थे. तो best way out was to give land grants and ask them to raise their armies, their security, and whenever king would be in crisis, it was expected that these feudatories would support the king with their armies. Now, in later times, this was handed to the Brahmins. Now, what was handed? This right to punish. Along with the right to punish all offenses against family, property and person. तो इसका मतलब judicial powers भी ट्रांसफर की गई. Now, in central India, they could try cases in donated villages. तो इसका एक नाम है जैसे अभ्यंतर सिद्धि. So that is adjudication of disputes, both criminal and civil. In North India, the judicial procedure was called Sodanda. Okay, and it was limited to criminal cases only. Now, no wonder such powers turned these areas into practically independent pockets. तो जब जुडिशियल फंक्शंस भी लैंड का उन लैंडेड ओनर्स को मिल जाते हैं तो वो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट किंगडम जैसे ही हो गए, और फिर उसमें से कुछ किंगडम्स राइज होके एम्पायर्स में कन्वर्ट होते थे. नाउ टेम्पल्स बिकेम लार्ज लैंड ओनर्स. अब ये जो लैंड ग्रांट्स टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज को देते थे, तो इवन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बेनिफिटेड विद दिस. दे बिकेम ओनर्स ऑफ ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, और उससे जो रेवेन्यू आता था दैट वाज एक्सक्लूसिवली यूसर्व्ड और यूज्ड फॉर द टेम्पल. अब टेम्पल में क्या कौन सा रेवेन्यू की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थोड़ी ना होता है, तो वो बेसिकली वहाँ के जो प्रीस्ट है या मोनेस्ट्रीज में जो मॉन्क्स है उनको मिलते थे वो पैसे. ओके, देन अग्रहार ग्रांट्स मेड टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज एक्सट्रीमली रिच. और इन ये जो टेम्पल के से एसोसिएटेड विलेजेस रहते थे, यहाँ पर आर्मीज को भी जाना अलाउड नहीं था, यानी तंग करना वहाँ के लोगों को एक्सेट्रा, ये सारी चीजें. So they were exclusively under the control of the priests and the Buddhist monks. So the feudalism followed the process of decentralization. Now the system of taxation and army-based coercive power were regarded as the two most vital and of the seven organs of state power. Now when these two organs were abandoned, कौन से taxation का ये and coercive power, that means the use of the might of the state power. तो might किसी state power की कैसे होती है, वो उसकी army से होती है. Now when these two organs were abandoned, it led to the disintegration of state power. Now Kautilya defines Brahmadev tenures as having freedom from taxes and punishment. Then however, in 5th century AD, Brahmadev grants came to be redefined and judicial and administrative rights were also added to it. तो यानी और भी ज़्यादा मिल गया. So this would finally result into decentralization and weakening of state power of the central authority. Now the Brahmin feudatories now performed administrative functions almost independently. Okay. Now the grants created a class of powerful intermediaries with considerable economic and political power. Now the functions of collection of taxes, levy of forced labor, regulation of mines, etc. were transferred from state officials to Brahmins in the beginning and later on to the warriors as well. Now there was a paucity of bullion. Bullion मतलब क्या होता है? Gold. So as long as coins were used considerably, salaries and even religious dues were paid in cash. Now this was the case under the Kushans, Satavahanas and to some extent under the Guptas. लेकिन जैसी इन सब की कमी होने लगी, ट्रेडिंग एक्टिविटी या कॉमर्स जैसे जैसे डिक्लाइन होना शुरू हो गया, तो पेमेंट्स करनी पड़ी थी लैंड के फॉर्म में. एंड दिस प्रैक्टिस ऑफ विच and in this practice the Brahmins were the major beneficiaries. So post Gupta paucity of coins necessitated the remuneration by the land grants for religious and secular services. So land grants to extend cultivation. Now in North and East Bengal, land was granted to extend cultivation. So as I told you, more area were brought under cultivation, more jungles were cleared, especially in the fertile lands.
एंड ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। तो एक अग्रेरियन इकोनॉमी को एक्सपैंड करने का भी उसके पीछे रीजन था, लैंड ग्रांट्स देने का। Now, Brahmins were granted tax-free lands in pre-Mauryan and Mauryan times so as to extend cultivation. So, Kautilya provides with an evidence of large-scale reclamation of virgin lands through land grants. So, from Gupta period onwards, there was a deliberate attempt to extend arable land by grants to temples and brahmanas. Okay. Now, the boundaries of such lands were undefined. Now, Shudras automatically became peasants now. So previously peasants were mostly Vaishyas. Now Vaishyas went into trading. They did not cultivate anymore. And जो शूद्रास जो प्रोड्यूस करते थे और तो उसको मार्केट में ले जाना और बेचना, ये एक इसके लिए एक कम्युनिटी बन गई, and that was the Vaishyas. So Vaishyas were also originally Shudras, and just because of this trading, as they got prosperous, they claimed the Dvija status in the uh, Varna system, and they got it. But law book from Gupta age onwards state that land was rented to Shudras for one half of the produce. Now Hyun Sang describes Shudras as a class of agriculturists, which is true also. So Shudras rose from the position of slaves and hired laborers to that of peasants owning fields. Owning matlab, in a way, no, real owner was the zamidar or the landlord, but उनकी कई generations एक ही field पे निकल जाती थी. So in a way they were owners. So farmers population was therefore largely composed of Shudras from Gupta times onwards, and the term kisan, kisana, kisan जो बोलते evolved to represent the Shudra peasant. तो किसान word जो चालू हुआ, अभी जिनका बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, ये इसी पीरियड में 7th-8th century AD onwards ये term evolve हुई basically. So villages became self-sufficient economic units. The Dhoni's special economic rights weakened economic ties between the center and the donated area. Then revenue earned was invested locally. Now the main idea behind tying the peasants to his field was to preserve the self-sufficient village economy. Now Dhoni's weren't allowed to let tax-paying peasants and artisans from another village to settle because migration to those tax havens would decrease state income and disturb the economic balance of the other village. So that is how इनको एक जो पेजेंट्स थे उनको एक नोशनल ही सही एक उनको राइट दिया जाता था कि दैट यू आर ओनर्स, इन रियलिटी दे वर नॉट। तो जहाँ पर उनकी कई जनरेशंस निकल जाएंगे, उसका मेन रीजन ये था दैट दे शुड नॉट माइग्रेट, बिकॉज इफ माइग्रेशंस और इंडियन सोसाइटी आगे नहीं बढ़ने का भी एक बहुत बड़ा रीजन यही रहा है कि यहाँ पर माइग्रेशंस ज़्यादा नहीं होती थी। सो जहाँ माइग्रेशंस होती वहाँ पे फ्री इकोनॉमी डेवलप होती, नई आइडियाज़ इधर से उधर का एक्सचेंज होता है, नई टेक्नोलॉजीज आती है। तो वो एक ये रीज़न है कि माइग्रेशंस वर नॉट अलाउड एंड दैट इज व्हाई इंडियन सोसाइटी बिकेम स्टैग्नेंट। ओके, now decline in trade. So decline in trade is seen from Gupta times onwards. Now silk, as I told you, along with spices होना चाहिए, was the main Indian export to Roman Empire, but for which India received gold bullion. So drainage of bullion for silk from Byzantium was such that Justinian जो था, he was forced to regulate the price of silk. एक्चुअली रोमन एम्पायर में सिल्क की इतनी डिमांड बढ़ गई थी और जो इंडिया और चाइना से में प्रोड्यूस होता था इंडिया के थ्रू इंपोर्ट होता था, तो उसकी वजह से वहाँ का बहुत सारा गोल्ड बुलियन रोमन एम्पायर से बाहर जा रहा था। तो इसके लिए वहाँ का जो किंग था जस्टिन, उसने उस पर एक रेगुलेशन लाया, सिल्क की प्राइजेस पे ड्यूटीज लगाई और उसको प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी ताकि वो ज़्यादा पॉपुलर ना हो, क्योंकि लोग उसको खरीद के वहाँ का सारा कॉइन और वहाँ की करेंसी इधर भेज रहे थे। सो सिल्क वर्म्स नाउ, अब बाद में क्या हुआ कि ये सिल्क वर्म्स बाइजेंटियम एम्पायर में खुद ही इंट्रोड्यूस हो गए, दे लर्न द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सिल्क, तो उसकी वजह से इंडिया का रोल अब उसमें खत्म हो जाता है, इवन चाइना का भी।
तो ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी अपने आप कम हो गई, एंड द रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय सिल्क ट्रेड vanished in India. So silkworms were introduced in Byzantium Empire in 551 AD, and by the end of 6th century greatly affected Indian trade. The northwestern Indian trade was further disrupted by Arab expansion under Islam. Then trade with China increased, but its inflow leading to the decay of urban centers. So as I told you, there was a ruralization of economy that was taking place in India. फिर जो सिल्क रूट है, so in ancient time, a network of caravan trails stretched from China across Central Asia and eventually all the way down to Rome. Around 10,000 mile round ये round trip होती थी. तो अभी ये इनफैक्ट वो सिल्क रूट फिर से बन गया है, और वो चाइना ने एक बीजिंग से लेके मैड्रिड तक एक ट्रेन शुरू की है, स्पेन तक, विच कवर्स मेनी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज से होते ही वो ट्रेन जाती है. So this was the Silk Route, which served as important means of business relations and cultural exchanges between East and the West. In addition to silk, the route carried many other precious commodities such as gold, ivory, and spices. The Silk Road was also a route for exchange of information and ideas. Okay, now Buddhism traveled from Indian subcontinent to China by the Silk Road. Now very few people traveled the entire length of the Silk Road, because वो 10,000 किलोमीटर की लेंथ ऑब्वियसली कौन कवर करेगा. तो बीच बीच में के डिस्टेंसेस लोग कवर करते थे, लेकिन वो रूट उतना ही था. और इनफैक्ट अभी वो फॉर्मली उस पर रेलवे लाइन शुरू हो गई है. Now goods passed from one trader to another in short goods were segments, and this is how goods traveled from one place to another. ठीक है, तो एक पार्ट कोई ट्रेडर करेगा, दूसरा पार्ट दूसरा ट्रेडर उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, तीसरा. तो फिर उस वैसा करते करते 10,000 किलोमीटर्स गुड्स ट्रैवल करते थे, लेकिन एक्चुअली ट्रेडर्स को उतना ट्रैवल करने की जरूरत नहीं थी. नाउ ट्रेड रिजेंबल्ड अ चेन with each trader and segment of the trade route representing a link in the trade. Now the Silk Road was often very dangerous to travel. Now Muslim Turks seized much of the land along the Silk Road in the 10th century, and with this Silk Route basically got disrupted. Now Mongol armies used the Silk Road in the 13th century to expand their empire under Genghis Khan. Now as traffic increased, oases along with various routes transformed themselves into trading centers. Now, the Silk Road lost its importance after Vasco da Gama circumnavigated Africa to find a water route to India. Now, once the water route to India was found or to the Indian subcontinent, तो उसके बाद ये Silk Route का importance खत्म हो जाता है, because ship से travel करना आसान है, उसमें goods भी ज़्यादा भरे लेके transport किए जा सकते हैं. So the Silk Road lost its glory, not only its glory but its importance also. But now it has been revived. So it then became easier to travel between Europe and China by sea. ओके, और बाकी जो इसके कल्चरल और वो उसके एस्पेक्ट्स है, उसके बारे में तो हमने ऑलरेडी बात कर ही ली है, वो शायद पीपीटी में नहीं है. ओके, सो विद दिस वी एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी. और अभी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में एक लास्ट टॉपिक बाकी है, एंड दैट इज the legacy of science and civilization in India. Okay, so after that topic, we will be completing ancient Indian history.